Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial of the day will be discussed in this session. Let's get started with news topic list. Today is 22nd of March. The first news is Indo-Pacific should be free from the conflict. This is what the Prime Minister of Australia has to say. Second news, less than 1% of oil is being imported from Russia. This is what the statement coming from the government of India. Third, RBI will ensure enough liquidity to support business. This was a statement made by the RBI governor. Second last news, that is India US official to discuss 2.2 plus 2 preparedness. And the last is an editorial from the Hindu, that is whether unemployment benefits has been availed by the concerned people or not. A brilliant editorial which will give you an insight about the unemployment benefits. Apart from this, at the end of this video, there will be MCQ based question. These questions will be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. Without any further delay, let's get started. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. And just to tell you about our newer app, this is a updated version 2.2, which will give you a lot more other facilities, right? So to get this app, you can reach out to the description section of this video. मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के में उसमें लिंक दी है, जहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे. So starting with the first news of the day, that is Indo-Pacific should be free of conflicts. This particular news is important for General Studies paper 2 in mains, that is bilateral regional grouping and agreement evolving India's and affecting India's interest. Now let's understand this news in detail. So recently there was a virtual meet which held between the Prime Minister of India and Australian Prime Minister, where they specifically focus about the Indo-Pacific and how to expand the bilateral ties between India and Australia. Indo-Pacific is something very important for your examination, whether it is prelims or mains. यहाँ पे दोनों जगह से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं. जो मैप वर्क है इंडो पैसिफिक को लेकर के, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट. एंड द मेंबर कंट्री, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द इंडो पैसिफिक member, which include Australia, India, Japan, and United States. Right? So these are the country which are the part of the Indo-Pacific. So India has sought a continuous cooperation among the democracies. It called for free, open, and inclusive Indo-Pacific, and Quad need to be successful and global security. In terms of regional and global security, Quad called for its all successiveness. And both countries have reviewed the aggressiveness of China, where Eastern Ladakh में जहाँ पे जिस तरह से escalations हुई है, India have always been vocal about this. But the Quad member has also taken the cognizance and the efforts which was made by China in terms of repression to India, right? Ukraine crisis की अगर बात करें, it was also a highlight point in the meeting. So India and Australia have expressed a serious concern over the conflict and the humanitarian situation that is arising in the Ukraine amid the invasion that has taken place by Russia. बहुत सारी buildings, normal civilians के life loss हुई है, उसको लेकर के भी concern raise की गई है. और the Australian Prime Minister has noted that Russia must be held accountable for this tragic loss, which has basically destroyed a lot more buildings, civilian life. जो वहाँ की एक नॉर्मल वर्क कल्चर, स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है, बहुत सारी चीज़ों को डैमेज की गई है. सो द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, दैट द अकाउंटेबिलिटी शुड बी सेट टू रशिया and Ukraine must ensure that the terrible events which has never occurred in the Indo-Pacific, इस तरह की कभी भी इससे पहले Indo-Pacific region में ये जो crisis चल रही है, even it can impact to the Indo-Pacific region as well. So this is what the Prime Minister has to say, that we have to take the cognizance and accountability has to set to the Russia. Now call for a greater cooperation. This is what both country has advocated for. So addressing the bilateral annual leaders meeting, Australian Prime Minister ने ये भी अर्ज किया कि they need to have a cooperation among the like-minded countries. Like-minded countries में Quad के members भी हैं, which can play a substantial role in making the things vocal, in making the thing more presentable and more approachable proactively, so that entire world can recognize it. And India has focuses on Indo-Pacific region, where it's called for appropriate global standards and emerging technologies. So these are the things which India specifically has focuses upon. Now comprehensive strategic partnership agreement की बात की गई है with Australia.
So Australia has led a broad spectrum of comprehensive strategic partnership. दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ एक स्पेसिफिक एरियाज हैं जिनको हाईलाइट की गई है, which include science and technology and development, that is called R&D. So R&D is the important part here. Then defense is something which is very important. Critical mineral that are necessary for India's strategic sectors. So ये कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे comprehensive strategic partnership agreement या फिर कीपा की भी बात की गई. Now, the Comprehensive Economic Cooperations Agreement will have very important areas which include economic relations, economic revival, and economic security. Now, other news, that is less than 1% of the oil imported from Russia. This is what the Minister of Petroleum and Natural Gas, Mr. Hardeep Puri, has to say in the Rajya Sabha statement. In supplementary that was asked by the minister, he was replying to that. So this particular news is important for General Studies Paper 2, Effect of Policies and Politics for Developed and Developing Countries and India's Interest. So recently, the Union Minister for Petroleum and Natural Gas was recently addressing the Rajya Sabha, and he had made his statement regarding that the import of oil that is coming from Russia is contributing only 1% of the total import. This is what the minister has to say. And in all major crude oil that is coming from Iraq, Saudi Arabia, UAE, Nigeria and US. I have already given you a picture, infograph, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इन कंट्रीज से ज़्यादा इंडिया इंपोर्ट करती है कंपेरेटिवली रशिया से. Now, India imported 7.3 billion of its oil requirement from the United States. और कुछ मेजर कंट्रीज है जहाँ से इंडिया इंपोर्ट करती है, दैट इंक्लूड इराक, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, एंड इवन नाइजीरिया फॉर टाइम बीइंग इज आल्सो द पार्ट ऑफ इट. And India require 5 million barrel oil per day. This is the requirement for India, and almost 60% of which come from the Gulf countries. तो ये जितनी Gulf countries हैं यहाँ से ज़्यादा इंडिया ऑयल इंपोर्ट करती है. Now crude oil purchase की अगर बात करें रशिया से, so India purchased almost for this much ton of the crude oil from Russia in the first 10 fiscal year, and it has gradually accounted for amount to 0.2%, right? And further, India imported 0.3% in 2021, which is like 1.3% of the total import that was brought for 2019 and 20. So less than 1%, or you can say average of 1%, it was being imported from Russia. Indian oil companies has invested 16 billion in Russia, and those invested were profitable. तो जितने भी इन्वेस्टमेंट इंडियन कंपनीज ने रशिया में की है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ही रही है, और अमाउंट आप देखोगे काफ़ी हाई है, दैट इज $16 billion. Now, natural gas की requirement की अगर बात करें, the Union Minister for Petroleum and Natural Gas has stated in his reply that India import 85% of crude oil requirement and 54% of the natural gas requirement. बाकी इंडिया खुद इंडिजियसली प्रोड्यूस करती है और कंज्यूम करती है. Now, RBI will ensure enough liquidity to support business. This particular news is important for General Studies Paper 3, Indian Economy and Issues Related to Planning, Mobilization, Resource Growth and Development. So, RBI के गवर्नर ने recently अपने statement में कहा है that Indian economy is well equipped to tackle any spillover effect that is coming out of the Ukraine or any global situation, जहाँ पे US Fed के भी आप example ले सकते हैं जिन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात की, और रिसेंट में जिस तरह से यूक्रेन की क्राइसिस चल रही है आफ्टर रशिया इन्वेडिंग यूक्रेन. सो इस सारे सिचुएशन से हमारी जो सेंट्रल बैंक है दैट इज आरबीआई इज इक्विप्ड एंड रेडी टू टैकल द प्रॉब्लम्स, राइट. सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has a primary responsibility to maintain the price stability in the country or to maintain the inflation. This is the duty of the RBI. And India still has 4% plus minus of inflation target, which is still below the rate. But to some extent, we have seen almost close to 6.2% of the interest rate. Basically, जो inflation है वो बढ़ती हुई भी दिखी है. But the safest is 4% plus minus 2. Now, क्या measures ली है RBI ने? So the RBI governor has said that since the pandemic struck the economy in March 2020, सेंट्रल बैंक ने ऑलमोस्ट 70 लाख करोड़ रुपीस जो सेक्टर्स में लिक्विडिटी के तौर पर रिलीज की है, एंड इट हैज हेल्प द इकोनॉमी ओवरऑल प्रोडक्शन डिमांड. एंड द आरबीआई गवर्नर ऑल्सो सेड कि जो फॉरेक्स रिजर्व है इंडिया की दैट इज ऑन द हायर साइड, दिस अमाउंट टू $677 billion एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट.
अगर किसी तरह की करंट अकाउंट डेफिसिट की भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास सफिशिएंट फंड है जो कि हम फॉरेक्स रिजर्व से भी यूज कर पाएंगे एंड लो करंट अकाउंट डेफिसिट इन द इकोनॉमी विद बेटर पोजीशन. Now, inflation monitoring की अगर बात की जाए, which is a duty and the role of the RBI. So both RBI and center were monitoring the crude oil commodity prices and the volatility which is continuing in the market, especially in the energy sector. And it is expected जो inflation है that would not cross 6% for the financial year of 2023. This is what the RBI has to say in its confirmation statement. So the RBI governor has ruled out any risk of stagflations. जहाँ पे इंडियन इकोनॉमी इस तरह के स्टैगलेशन की सिचुएशन को अगर फेस करेगी आने वाले समय में तो इसको पूरी तरह से रूल आउट किया गया. मेक श्योर यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे. Now, Indian economy growth is projected to be around 8.9%. This is what the anticipation is. Post-COVID, the recovery in every sector has been seen, and we expect this growth to coming for the next basically जो पूरे year financial year में ये growth देखी जा सकती है. Now, India-US officially discussed 2.2 preparation. This is something important for General Studies Paper 2, government policies and intervention for the development of various sectors and issues arising from a design and implementations, right? So India and United States have sought to add momentum to the preparation of 2+2 ministerial dialogue, which is scheduled to be held in Washington next month. और यहाँ पे रशिया ने जिस तरह से ऑपरेशंस की हैं यूक्रेन में इन्वेट करने की कोशिश की उसको लेकर के भी डिस्कशन होगी बिकॉज यूएस हैज बीन वोकल ऑन दिस पार्ट एंड दे हैव ऑलरेडी सपोर्टेड यूक्रेन फ्रॉम बेसिकली मेनी एस्पेक्ट्स, चाहे वो मिलिट्री लेवल पे हो चाहे वो फिर डिफेंस इक्विपमेंट्स देने की बात हो, बट डायरेक्ट पेनिट्रेशन नहीं की थी यूएस ने, बट दे हैव always said that they are supporting the part of Ukraine, right? So let's see what discussion is going to be on that part. और रशिया पे क्या जो sanctions यूएस ने लगाई है वो और ज़्यादा strong की जाएगी या उसे liberal किया जाएगा, that has to come from the 2+2 ministerial meeting. So most of the visitor has believed to discuss on the issues of Ukraine, particularly India, जिसने अपने positions को लेकर के जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई थी उस पर एब्स्ट्रेन किया था, they have not voted, right? सो इंडिया की स्टैंड को लेकर के भी यूएस ने इत्तेफाक नहीं रखा उस बातों से, एंड इवन दे सेड दैट इंडिया शुड बी मेकिंग इट स्टेटमेंट, बट इंडिया हैज एब्स्टेन्ड फ्रॉम द वोटिंग. लेट्स सी व्हाट द कंक्लूजन दैट इज कमिंग फ्रॉम द 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग. Now, the External Affairs Minister and Defense Minister of India is expected to visit United States in the next round of 2+2 consultation, जहाँ पे वो United States के Secretary of States से मिलेंगे, and even the Defense Secretary has been postponed their several meetings, right? So this was a meeting that was postponed because of the COVID and many other situations. Now this meeting is expected to give a roadmap to the bilateral relationship between India and United States. Now the editorial part, whether unemployment benefits. This particular editorial is important for General Studies Paper 2, welfare schemes for the vulnerable section of the population by the center and the state. So this editorial is written by Shyam Sundar. He's a professor at Xavier School of Management, Jamshedpur, right? Now, moving ahead with the part of the editorial that I'll be discussing with you, there are some important subtopics. First is quarterly unemployment statistics, unemployment relief from the government, Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana, Industrial Dispute Act 1947, Social Security Act or Code 2020, unsuccessful scheme of the government, and some conclusion that is drawn by the editor. और पूरे एडिटोरियल की थीम है अनएम्प्लॉयमेंट डेटा और पॉलिसीज को लेकर के. सो अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड, जिस तरह से कोविड-19 ने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हाई किया है, इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द कोविड-19. बिफोर कोविड-19 ऑल्सो इंडिया हैज सीन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट पीकिंग अप टू 6.1%. नाउ द अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, अगर ये 2018 और 19 के अगर डेटा को लेते हैं, यू फाइंड दैट दिस इज 7.8%, राइट? और वहीं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो थी दैट वाज 5.3%, while unemployment has declined to 5.8% in 2018-19 और रूरल एरिया के दिस वाज ओनली 4.8%, राइट? तो इस तरह से मार्जिनली 7.7 to 6.9% रिस्पेक्टिवली डिक्रीज हुई है. यू कैन पॉज दिस वीडियो and you can take out the screenshot so that you can figure out how the difference is working और किस तरह से रेट जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट की वो इंक्रीज हुई है. Now quarterly unemployment statistics की अगर बात करें, so the current weekly statistics coming from the unemployment statistics area, urban areas में अगर बात करें, this is 9.4% in January March,
which has rose up to 12.6% for April and June. Right? This is the number, the correct number coming from the government data. और जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है उनके डेटा के मुताबिक जो एवरेज अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है that is 9.04% for 2020-21. And in February this year, it has substantially upgraded to 7%. It is on an increasing trend. So we have to see that how it will function in the coming year down the line. Meanwhile, जो rural unemployment है, that has rose up to 8.35% in February 2022, and it is fluctuating 5 to 7% since 2021. तो जून से ही अभी तक में fluctuation देखी गई है, which is again an increasing trend that we can see. Unemployment relief from the government, किस तरह से गवर्नमेंट ने initiatives लिए या क्या measures ली. So labor law do not have expressly provided the unemployment benefit. This is what the editor has to quote. कुछ important schemes थी like Employment States Insurance Act 1948, उसके बाद राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना that have provided unemployment allowances to the underemployed person. But इसकी जो contributions थी वैसे लोगों के लिए थी जिन्होंने 2 years तक अपने contributions दिए हैं ESI में, राइट. कैश रिलीफ दी जाती थी उन लोगों को. जो फर्स्ट एवरेज थी जितनी उन्होंने कंट्रीब्यूशन दी उसकी 50% मिलती थी फर्स्ट ईयर में, और उसके बाद अगले 12 महीने में द नेक्स्ट 2 years में 25%. सो दिस इज वेरी लेस अमाउंट विच दे आर गेटिंग ऑन देयर कॉन्ट्रीब्यूटिंग पार्ट. एंड इट कवर अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू रीट्रेचमेंट, क्लोजर्स और परमानेंट इनवैलिडिटी. बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो प्रोवाइड नहीं की जाती है, और इस पर्टिकुलर थिंग्स में अनएम्प्लॉयमेंट, टेन्योर एंड वोकेशनल ट्रेनिंग वाज दैट पार्ट, राइट. बट ऐसे जो सेक्टर्स के लोग काम कर रहे हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, दे वर मोस्टली पीपल हु वर हैविंग द प्रॉब्लम इन कंटिन्यूइंग द सस्टेनेबिलिटी एंड लाइवलीहुड ऑप्शंस. नाउ अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की अगर बात करें 2018 में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, एंड दिस वाज अंडर द अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योर्ड पर्सन विच प्रोवाइडेड एश्योरेंस ऑफ रेट 50%, जहाँ पे एवरेज अर्निंग जो है वो क्लेमेंट 90 डेज से लेकर के 2 years तक अपने पायलट बेसिस पे क्लेम कर सकते हैं. And this was extended during the COVID-19 period as well. But the cash that is essentially required was not provided. Even the cash transfers were not that much, और इसमें भी कुछ हद तक डिले रिपोर्ट की गई. Now Industrial Dispute Act 1947 जो एक बहुत पुरानी एक्ट है, जो कि इंडस्ट्रियल जो रेगुलेशंस हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट में लोग काम करते हैं, इवन इफ इट इज 100 और मोर देन 100, they must be paid compensation for 15 days on an average pay. But it has not actually worked. और कुछ ऐसे एम्प्लॉयमेंट जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज से रिलेटेड लोग थे, उन लोगों को एक्चुअली इसकी बेनिफिट्स नहीं मिली, राइट. सो द जॉब लॉस ड्यू टू गवर्नमेंट सैंक्शंस वर्कर ऑन रीट्रेचमेंट और क्लोजर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट was not taken into consideration. So these are the rules that actually have come up with the Industrial Dispute Act, but इसके जो resolutions थे वो लोगों को benefits के तौर पे नहीं मिल पाई. सोशल सिक्योरिटी कोड की अगर बात करें 2020, द सोशल सिक्योरिटी कोड इंक्लूड अनएम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन डेफिनेशन अंडर द सोशल सिक्योरिटी, एंड दिस एक्ट इज समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी फेवरिंग द सोशल. बेसिकली ऐसे लोगों को भी इंक्लूड की गई है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी. सो अनऑर्गेनाइज वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ सोशल सिक्योरिटी हैज बीन टेकन केयर इन द प्रपोज कोड, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिटेन द एग्जिस्टिंग प्लानिटरी रिटेचमेंट कंपनसेशन बेनिफिट टू द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, जो IRC के अंदर भी आ सकते हैं. Now, moving ahead with the unsuccessful schemes, क्या ऐसे unsuccessful schemes थे जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से करने की कोशिश की, बट उसके सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन प्रैक्टिकली नहीं मिल पाए लोगों के. सो एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस, जो राष्ट्रीय किसान योजना है, RKG इसको कहते हैं, 2007-18 या फिर 1920 की अगर बात करें, insured person has availed unemployment that is only 1034% per year. So ये नंबर काफ़ी कम है. Further, unemployment allowances has shared the total expenditure of the range between 0.25% to 0.99%, which is again substantially low in their contributory part. And this scheme do not matter in the organized sectors with 7 even during the pandemic, क्योंकि ऐसे वर्कर्स जो उस सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं जिनको एक्चुअल बेनिफिट की जरूरत है, दे आर नॉट aligned with this particular policies or the program. On the other hand, during pandemic, Manrega has played a significant role in providing the modest relief to the million of people. But मनरेगा के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो बजट एलोकेशंस हुई हैं वो काफ़ी लो रही हैं इस बार भी. नाउ कंक्लूजन्स की अगर बात करें, रिटेल इन्फ्लेशन हैज़ बीन होवरिंग अराउंड 6% एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स इज अराउंड 12%, विच इज़ नॉट अ गुड नंबर एट ऑल.
and the reductions of the EPF, अभी recent में EPF ने rate cut की है. This cut is again something which is not appreciated by the stakeholders. And even the laws and welfare schemes must offer relief to the marginalized worker reeling under the multiple pools. And an urban unemployment guarantee scheme should be framed to avail and elevate the suffering of the worker in the union labor markets. So these are some of the essential points that government should note, and essentially it is required because if the economy is recovering, these people should not be left out, and government should make a pace so that they should make an effort कि ऐसे लोग जो वापस छूट गए थे कोविड के टाइम में या जिनकी लाइवलीहुड ऑप्शंस पूरी तरह से खत्म हो गई वो भी वापस से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके. Now moving ahead with the MCQ questions of the day, before I proceed just to tell you the answers of yesterday questions. For first question the correct option is C. For second question also the correct option is C. Today's MCQ for practice आपको बताना है साइंटिस्ट क्या है, किस लिए न्यूज़ में थी. It is a GNI enabled tracking system for sand dunes, social security scheme for differently abled, instant messaging app of the government of India, and a news of the fertilizer that is developed by the ICR New Delhi. Second question of the day, SAT, that is Security Appellate Tribunal. इसके कौन-कौन से statement correct हैं? SAT is a statutory body established under the provision of SEBI Act 1992, and the presiding officer of the SAT shall be appointed by the President of India. It's an important and powerful body. आपको इसके function के बारे में भी पता होना चाहिए. So this was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQ questions. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.